Hey guys, I'm Mihir Joshi and this is Just Talk Sneakers, brought to you by our energy drink partner Hell Energy and our biking partner Aether. Now this is a show where I talk to some of your favorite celebrities, content creators, influencers and all sorts of interesting people about their love for sneakers, and I take you deeper into the sneakerverse. Now, for today's episode, I have the apple flavor of Hell Energy, and apple gives you a ton of energy, and I need all of that energy to match up with the energy of two people who've come down here at Extra Butter in Mumbai. These guys have made you laugh, they made you dance, they've made you fall in love with each other. Best friends who have now recently gotten married, and I'm very happy to have on Just Talk Sneakers two really, really nice people. Let's welcome Akash and Simran. Guys, welcome to the show Just Talk Sneakers में आप दोनों का स्वागत है. Thank you so much. तो शुरुआत करते हैं as I always do with like a origin story कि तुम लोग का ये जो प्यार है जो स्नीकर्स के लिए है वो कैसे शुरू हुआ. Let's start with you, Simran. So पहले तो यार like sandals and all were very common on dresses. But I remember 2016 के around trend आया that you can wear sneakers on dresses. Yeah. ये trend आया जब I was so happy and so relieved that I can finally not wear heels and wear sneakers on dresses. And Nice. अभी you know there are wedding sneakers as well. I know. Customized sneakers जहाँ पे उस पे क्या bling रहता है. Beads and everything. बहुत जबरदस्त They बनता are है. so pretty. But have you gone to events wearing a dress but with sneakers? Yeah, of course. काफी बार किया होगा ना? बहुत बार. इनफैक्ट मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहनी थी एंड आई वाज लाइक यार इसके नीचे तो हील्स ही पहनने पड़ेंगे, बट आई वाज लाइक नहीं यार हील्स पहनने का मूड नहीं है, स्नीकर्स ही पहनती हूँ. सो आई जस्ट वोर नाइकी एंड क्या बात है. एक बार तो आई रिमेम्बर कि घर पे पहुंची है, बोल रही मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरा कपड़े नहीं है. मैंने बोला यार ये मजाक मत कर मेरे साथ, ये बहुत ज़्यादा मजाक हो चुका है. शी वाज लाइक आई हैव नो क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. है तो सही, तू समझ नहीं रहा है ये शू के साथ करस्पॉन्डिंग मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं क्या करूं. रात को 10 बजे एक वहाँ पे शॉप है, उसको कॉल किया ये बंदी ने कि प्लीज़ वो शॉप खोल, मेरे को तेरे शॉप पे ये कलर और ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ मेरे को कुछ दिखा. और उस बंदे का जो एक लास्ट ड्रेस थी एंड शी वाज लाइक दीदी मेरे को दे बाद में देखेंगे, पैसे तो दे. वो लेके आई है. सुबह को 7-8 बजे वो रेडी होके वहाँ पे इवेंट पे पहुंचे 12 बजे. I think as sneakerheads, as people who love fashion, to go with sneakers, pairing your outfit with your sneakers is very, very important. And if you follow her on social media and you see the kind of stuff that she does, बहुत ज़बरदस्त है. I know you guys follow her for the fun stuff that these both do, but also look at her style and her sneakers. I love that. तो अब तुम बताओ, how did your love for sneakers begin? शूज़ एंड इस सब का तो शौक मतलब बचपन से था, बट एक वो होता है ना कि आपको 10 लोग बोलते हैं पहले ज़माने में, मतलब वैसे शूज़ होते थे तो कुछ मेरे को अलग टाइप के शूज़ पहनने का बहुत मन होता था. कलर के रेड हो गया, ब्लैक एंड रेड मिक्सचर ये वो. तो हमारे स्कूल में जैसे बुलीज होते हैं तो स्कूल में तो सैंडल्स एंड ऑल भी अलाउड थे, तो उनको क्या ज़्यादा मालूम रहेगा कि शूज़ क्या कैसे. तो व्हेनेवर दे सॉ कि मैं शूज़ पहन के आया सामने, ये शू पहनता है ये वो, तो चिढ़ाना हो गया एक तरीके से. 10 दूसरी चीज़ें तो एक यू डाउट योरसेल्फ. बचपन में क्या ही दिमाग होता है हमको. फिर देन आगे आस्ते आस्ते जैसे आई वेंट इन कॉलेज, आई वेंट फॉर माई फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल, मैं देखा यार मतलब है लोगों में, मतलब लोग पहनते हैं, लोग का दिखना शुरू हुआ मुझे कि लोग यूजुअली में अच्छे स्नीकर्स एंड अच्छे शूज़ पहनना, मतलब लोगों का शौक होता है. मैं अकेला पागल इंसान नहीं हूँ जिस तरीके से मेरे को बोला जाता था. तो वो आस्ते आस्ते जिस तरीके से डेवलप हुआ, और आजकल तो पहले तो सोशल मीडिया इतना कम था जब 2012-10 की बातें चालू हुए, तो लोग एक दूसरे को देख के दिखता था एंड ऑल. आपको बहुत कम एक तरीके से एक्सपोजर था. बराबर. तो अभी इंटरनेट पे इतना ज़्यादा हुआ कि लोग देखते कि देख इसने ये पहना है, देख इसने ये पहना है, देख. तो एक 10,000 किलोमीटर दूर भी इंसान को आप देख लेते हो कि अरे इसने क्या पहना है. तो उस टाइम से एक अलग शू पहनना, कुछ अच्छा पहनना, तब से आई एम लाइक हमेशा दिमाग में चलता रहता है मेरे को कुछ अलग पहनते हैं, कुछ अच्छा पहनते हैं. तो मतलब ये तो बहुत दूर जाती है ये बात मेरी, तो मतलब तो ये बोल नहीं सकते कि व्हेन इट स्टार्टेड, बट अब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, इतना बोलूँगा. पर मैं ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ये बताया ये, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोग को भी बता दूं
कि being a sneakerhead or falling in love with sneakers does not have anything to do with how much money you want to spend on it. Exactly. It's about connecting with the stories को, कि अगर आपको किसी स्नीकर के साथ एक लगाव हो जाए, उसके बारे में एक कहानी आपको मालूम पड़े, like a Jordan 1 for instance, you know, if you fall in love with the fact that Michael Jordan was such a great player, अगर आपने एयर मूवी देखी हो, उसके बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड में बताया था, और वो मूवी देख के अगर आपको लगा कि यार ये ज़बरदस्त है, तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एनीवेयर. एंड अब तो आपको मालूम हो गया है, लाइक जादू को भी मालूम है कि यार हज़ारों लोग हैं जो स्नीकर्स पसंद करते हैं और कलेक्ट करते हैं. वेदर यू हैव 5 स्नीकर्स और यू हैव 500, you are a sneakerhead. If you are in love with that culture, Exactly, yes. you are a sneakerhead. It's time now for our sneaker stories, where I show you some of the finest stores in India, which are not just sort of the birthplace of sneaker culture, but also जहाँ पे sneaker culture grow हो रहा है. So let's go into our segment of sneaker stories now. In 1981, brothers Ankur and Nick Amin moved to the United States from Gujarat, and in 2007, driven by a passion for films, fashion and culture, they started off a boutique concept store in New York called Extra Butter. Nearly 2 decades after that, they realized that Mumbai is definitely the place to be, and you could say Bollywood beckoned them, and they wanted to bring their love for fashion and films and of course sneakers and streetwear to Mumbai. And in 2003, just about a year ago, Extra Butter Mumbai was formed. They have some really incredible brands in store like Bape, Carhartt, Adidas, New Balance, Asics, Birkenstock, Crocs, Pleasures and a whole lot more. You got to go and check it out. And what I love most about the place is the vibe. And that there was a sneaker story spotlight on Extra Butter. Now we're going to find out a little bit more about both of them. तो यार थोड़ा deep dive करेंगे तुम दोनों के बारे में, about things that you love. Let's start with something very simple. The favorite sneaker from your collection. तुम्हारा favorite sneaker कौन सा है? Nike Air Force 1. Nike Air Force 1. What about I you? am wearing it today. You're wearing a Nike Air Force 1 today. And the white, pure white, एकदम दूर से दिखना चाहिए कि कपड़े कुछ भी पहने हो वो दिखना love चाहिए. these taxis a lot. The taxis are awesome and मुझको yellow बहुत पसंद है. I love this. Now, if you had to style the taxis in another way with something completely different, give us a visual representation of what you would do. I would wear it on a short black dress Short black dress. Nice. Very cool. and short white dress, or I was also gonna pair it with white cohorts today. So yeah, there are Lots of options. so many options, and in Correct. fact, because I didn't get my white cohorts or anything, so that's why I'm wearing this white jacket and also this glasses only because I'm wearing taxis and I wanted Commitment to the cause. I love that. I love that. Fantastic. अच्छा आकाश, let's find out a little bit about. मैं हमेशा कहता हूँ कि हर स्नीकर पाने के पीछे ना एक अच्छी कहानी होती है. हाउ डिड यू गो अबाउट इट, कहाँ गए, किधर से खरीदा, किस तरीके से आया, किसी ने गिफ्ट किया. सो व्हाट्स योर क्रेजीएस्ट कॉप स्टोरी? एक तो एक कॉप स्टोरी नहीं आएगी, बट एक बोलते हैं ना एक फ़ोन पे रोने वाली स्टोरी है कि फ्रेंड आ रहा था यूएस से एंड मेरे को एक स्नीकर पसंद था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको कॉल किया. मैंने कहा ब्रो देख तू यहाँ रहता है, तेरे से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर रहेगा, तेरे को जाना पड़ेगा. बोलता है तू भाड़ में जा, मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ जा यार प्लीज़. मैं रो रहा हूँ. मैंने उसको हफ्ते में 7 दिनों में कम से कम 150 कॉल किए, प्लीज़ लेके आ. एंड में परेशान हो गया. फिर लेके आया तो एक ऐसा कन्वर्सेशन हो गया कि मुझे ऑब्वियसली उसको पैसे देने थे. तो उस टाइम पे नाउ फ़ोन मेरे हाथ में फ़ोन चालू है एंड साइड में मेरे डैड खड़े हैं. तो उस टाइम मेरे को रिकलेक्ट हो, डैड को पता चल गया तो कितने का मंगाया मैंने. मैं बचपन में स्टोर पे गया था, तो तभी से ऑब्वियसली आपको वो शूज़ देख के वो आपको लगता है कि यार इतना अच्छा शू है, मेरे पास होना चाहिए. एंड बचपन में तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे नहीं थे, तो पापा को बोले पापा ये शू चाहिए मेरे को. बोला तो पापा ने ऐसा उठा के देखा, इतना महंगा, तुझे ये शू चाहिए, पागल हो गया, शू पे कोई इतना खर्चा करते हैं, ये वो बहुत चिल्लाया. मैं रोना शुरू हो गया और पकड़ के मेरे को घर लेके आ गए. और आज अगर मैं बताऊँ कि मेरे शू की कलेक्शन का जो टोटल कॉस्ट है, वो मतलब आपको जो पता चला था कि PS5 का इतना कॉस्ट है, उससे थोड़ा नहीं कहीं ज़्यादा है. तो
मेरे को तो घर पे मार ही देंगे, इसलिए मैं ऐसा छुपा के एक ऐसा अच्छा सा शेल्फ वेल्फ बना के रखा है, उस पर दबा के ऊपर से कपड़ा डाल देता हूँ। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने पहले एक एपिसोड में भी ये कहा था कि बाय स्नीकर्स, आपको सबसे महंगा स्नीकर लेना है या इवन बेसिक स्नीकर लेना है, बाय इट बाय फिगरिंग आउट अ वे टू अर्न दैट मनी फॉर योर स्नीकर। जल्दी में मत रहो, जब तक मम्मी पापा के पैसे से है वो जो ला रहे हैं वो लो, थैंक यू बोलो, बहुत खुश रहो। और खुद को अगर कोई स्नीकर चाहिए तो फिगर आउट, हसल करो। आजकल लड़के लोग ज़बरदस्त हसल कर रहे हैं। उससे याद आया, योर कॉप स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज तुम्हारे लिए एक स्नीकर कॉप करने की कोशिश कर रही थी। मेरी स्टोरी में ही इज़ ऑल्सो देयर एंड आई वॉन्टेड अ स्नीक दैट जॉर्डन फॉर यू। वो जॉर्डन पूरे इंडिया में सोल्ड आउट, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैंने इतने स्टोर्स पर पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किया अपने रिलेटिव्स को कि प्लीज़ अपने ये स्टोर पर जाके देख, वो स्टोर पे मुझे कहीं नहीं मिला। देन मुझे याद आया, ओ माय गॉड, आई हैव मिहिर, मैं मिहिर से बात कर सकती हूँ। देन आई कॉल्ड यू एंड देन ऑब्वियसली ही हेल्प मी आउट। ही गेव मी अ नंबर ऑफ अ पर्सन जिन्होंने मुझे इम्पोर्ट करवा के दिया। करेक्ट। सो फाइनली आई गॉट इट। Before we head into our deep dive segment for today, let's talk a little bit about three things that Hell Energy stands for, which is taste, energy and power. So taste की बात करें तो I gotta tell you, I've always loved your sense of style. It's beautiful. And if you had to describe your taste, your sense of style, how would you describe it? I think it's comfort. I always seek comfort in clothes, in sneakers, everything. So yes, and for that, if you'll ask me, my most favorite sneaker is it's Skechers actually. Oh yeah, nice. Yeah, It's super comfortable, very soft. Exactly. So Skechers, like you know, it was the first sneaker that I discovered, and since then I have always loved it. Obviously, I love others as well, but Skechers, it's like I carry it everywhere. आज भाई तुम तो बहुत बढ़िया स्टाइल करके आए। I love what you're doing right now. But I'm going to talk to you about energy because you've always been high energy, man, and I love that about you. You guys are working on a big project right now. Absolutely, हाँ. To keep your energy high during that time and to make sure that you know you can spend your entire day on your feet, not just तुम तो बस खड़े नहीं हो वहाँ पे, एक्शन हो रहा है, मारा मारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला। If you guys don't know what I'm talking about, follow him on social media and you'll get to know what I'm talking about. But उस दौरान, what was the sneaker that you were wearing to keep your energy up? एनर्जी बेसिकली एक तो आपका जो फुट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो सेट के जो बेसिकली जो मैं वेयर कर रहा हूँ, जो भी हम लोगों ने शूट किया है उसमें भी एक जॉर्डन है, बट यूजुअली मैं एयरफोर्स 1 ही पहनता था बिकॉज आई लव मिड्स एंड हाइज बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो आपको एंकल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ऐसा मुझे लगता है। What's that one sneaker that you feel कि यार ये अगर मेरे कलेक्शन में आ जाए ना तो this will be like my power sneaker. And what I mean by power sneaker, like कभी-कभी ना जब अच्छा like you wear a dress which is really cool or you wear a sneaker that's really cool and you go to an event, you feel like man, I feel like अगर मेरा energy इतना था वो और भी ज़्यादा हो जाता है, like you feel like हाँ, I'm the king of the world, I'm the queen of the world. So what's that one dream sneaker that you want to add to your collection which could possibly be your power sneaker? Yeah, that would be Jordan 1 Chicago. Ooh, great choice. And also, there is another one, Nike, that's Nike Air Max Portal. And guess what? I have already ordered it. क्या? Did you know that? नहीं। Yes, I have. किसके क्रेडिट कार्ड से मंगा है? I love their answers and I love the energy that they have. And speaking of taste, energy and power, I'm going to have a sip of my Hell Energy apple flavored drink. What makes certain sneakers super famous or extremely desirable is when two really famous entities come together and create a collaboration. This is exactly what happens when people like Travis Scott collaborate with Nike, and somebody like Sean Wotherspoon collaborated with Adidas. Ama Manier has been doing some incredible collaborations with Jordan brand. And the list goes on. If you look up sneaker collabs, you will see that some of the most famous sneakers, some of the most expensive sneakers in the resale market have been sneakers that were created out of a collaboration between two brands.
Let me now introduce you to my special guest for today's deep dive topic. He's an incredible artist who's done some phenomenal work with a whole bunch of brands. His brand collaborations range from sneakers to streetwear to all sorts of really, really cool things. Let's get on Just Talk Sneakers, the brilliant Shantanu Hazarika. Shantanu, tell me a little bit about your experience on working with various brands. How is the process of collaborating with a brand for you? And tell me about some of your favorite sneaker collaborations that you have seen over the last 10 years. Hi Mihir, thank you for that lovely introduction. And speaking of collaborations, I think over the last few years we've seen amazing collabs happen between artists, musicians, designers, and across all different brands. So the special thing about collaborations are you sort of try to merge two different aesthetics into one and create a perfect product which has sentimental value to it, which becomes a collectible. At the same time, it's a very limited thing. Speaking of our favorite collabs, I think I'm wearing one right now. This is Pleasures, which is a streetwear brand. Pleasures X Neon Genesis Evangelion, which is an anime. Again, two different things. Pleasures is a US-based brand, and then you have Neon Evangelion, which is iconic anime, and they came together to create statement pieces like this. And I think the other favorite collab will be something of mine that I have done. It's actually a pair that I had designed for Comic. This was a limited 300 pair edition that I had launched with Comic, which got sold out in like 30 minutes. Like, by the way, I really like the new Tyler the Creator X Converse that's there, the new collaboration that's coming out. It's a pretty cool one. Check it out. Hey, thank you Shantanu for being here with me on Just Talk Sneakers. If you're not already following him on Instagram, please do so right away. And now it's time to find out a little bit more about what's happening in your life. So abhi, भाई मुझे तो मालूम है, आपके सारे फैंस को भी मालूम है that you guys have been working on this super secret project. काफ़ी समय से काम चल रहा है. थोड़ा सा तो कुछ बता दो यार, Just Talk Sneakers में थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए. ये जो हमने अभी क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जो मेहनत लगी है वो पास्ट में कभी उतनी मेहनत की नहीं है और लगी भी नहीं है. लगा भी नहीं था कि कभी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. ये प्रोजेक्ट करने के बाद एक चीज़ हमको समझ में आई कि यार हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और हम वो पोटेंशियल निकालने में ना बहुत डरते कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा. बट ये जो प्रोजेक्ट किया ना हम लोगों ने, इसके बाद तो क्लियर हो गया कि यार बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसमें हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते थे. He's told me about this and we all know, following you guys, Ashish, on social media, कि ये तो एक बहुत बड़ा project है. What else is happening with you? Because I know you got other things happening as well. Anything that you want to share with everybody watching right now? So I'm working on a lot of things right now. Firstly, my content, and recently I got hurt, my foot got hurt. So I was kind of on a break, I was resting, and then festival. So yeah, I was resting, but now I've got to work on a lot of things. So yeah, something is coming up, you will come to know guys. So yes. So ultimately, you also did not reveal anything. तुमने भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं. मैं रिवील करूँगा तो मेरे को रिवील कर. But listen, we are now going to go into our sneakerhead of the week and my picks for the day from a brand that I love very much. So what is the brand and who's our sneakerhead? Find out now. Time now for my sneaker picks for today, and today's brand is a brand that I love collecting. I'm a big Jordan fan, and as you can see, I have a lot of Jordan 1s in my collection. So the 5 Jordan silhouettes that I recommend that you can start off your sneaker journey with are the Jordan 1, the Jordan 3, the Jordan 4, the Jordan 5 and the Jordan 11. You cannot go wrong with these. And speaking of somebody who has been on their sneaker journey for quite a while, let me introduce you to the sneakerhead of the week. He's a phenomenal photographer and a sneaker collector who's been collecting sneakers for a very, very long time. His photos have been taken by sneaker handles all across the world, and it is my great pleasure to introduce you all to our sneakerhead of the week, Sehaj Chaudhary. Sehaj, welcome to Just Talk Sneakers, my friend. Tell me your top 5 sneakers from your collection. Hey me, it's great to be on the show. Thank you so much for having me. So the top 5 sneakers from my sneaker collection are, first up we have the Yeezy 700 Wave Runners. Love these. These are my all-time favorite. Next up we have the Amiri Skeleton high top sneakers.
another great pair to have. Then we have the Air Jordan 1 High, not for resales. I love this pair, and unfortunately I had to pay resale for these. Then at number 4 we have a new sneaker. This is the all new Air Jordan 1 Low OG in the mocha colorway. Another great wearable pair. And finally we have my all-time grail. This is the Sean Witherspoon Air Max 97 1. I don't think any collab gets better than these. And those were my top 5 sneakers. Thank you so much for having me. So guys, it's almost time for me to say bye to Akash and Simran. यार हर बार जब हम मिलते हैं ना ऐसे लगता है कि यार मेरे फैमिली मेम्बर से ही मिल रहा हूँ. Genuinely feel so nice and again deeply appreciate that तुम लोगों ने इतना टाइम निकाला. I know you guys are super busy right now with your जो भी सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है. बिफोर वी रैप अप फॉर टुडे, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू ऑल ऑफ योर फैंस हु बीन सपोर्टिंग यू फॉर सो मेनी इयर्स? हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं यार. तुम दोनों के जो रील्स तुम लोग डालते हो, जो प्यार मिलता है तुम लोगों को, जो व्यूज मिलते हैं, क्या यार अमेजिंग. Of course, it's because of them. So guys, thank you so much for all the love and all the support हमेशा से. So thank you so much. Please keep loving, keep supporting. And as I told you, अभी थोड़ा कंटेंट हमने प्लान किया है, इनफैक्ट शूट भी किया है, सो आता रहेगा. प्लीज चेक आउट आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. लव यू ऑल. Follow them on Instagram. उनकी हैंडल स्क्रीन पे है. मेरा हैंडल है follow Zee Café India. Remember, there's a contest going on. You get a chance to win a customized sneaker done by Chaitanya Dixit. बहुत ही cool है. One of one sneaker है, तो make sure you go and check that out. QR कोड भी स्क्रीन पे आ जाएगा. But before we wrap up for today, I have a special gift from our friends at Aether. Got some cool things that every sneakerhead needs. आप sneakers लो, but take good care of your sneakers as well. That way you can keep them for a very long time. So some really cool products. I hope you guys enjoy them. Thank you Aether for hooking up my friends Akash and Simran with some really cool sneaker cleaning products and these two awesome crates. तुम्हारा जब वो power sneaker आ जाएगा ना, एक crate में डाल देना एकदम लोगों को देखने के लिए कि यार ये है that awesome sneaker. But that's pretty much all for now. Akash, thank you my bhai for being here with me, and Simran, thank you so much for being here. Thank you so much for having us. From Extra Butter, that is Akash, Simran and Mihir. I'm back at the Experience Center and it's almost time for me to say bye to all of you and to this bike. But before I do, gotta remind you all, follow us on social media, the guests, Zee Café India and me, and let us know what you thought about today's episode. I'll be back with more fantastic guests right here on Just Talk Sneakers, brought to you by our energy drink partner Hell Energy and our biking partner Aether. This is Mihir Joshi saying bye-bye.